അവറ്റകളുടെ കരച്ചിലേക്കാന്തൻ എന്തൊരു സുഖം, എന്തൊരു സംഗീതാത്മകം. അപ്പുകുട്ടാ, നീ വന്നേ. ഓവറാക്ട് ചെയ്ത് ചളവാക്കാനാ പുല്ലേ. മോഹൻലാലിന് ഈ പടം റിലീസിന് മുന്നേ കാണുന്നൊരു സ്വഭാവം ഇല്ല. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അത് വിശ്വസിക്കും. ഇദ്ദേഹം പടം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല ഇത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. അയ്യോ ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഈ നാറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, ഈ നാറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും എന്താ പറയാ, ഇവരില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇനി ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് നശിച്ച് ഈ ബോളിവുഡ് നശിച്ച് അവിടെ ഹിന്ദു എന്താ പറയാ, അയ്യോ ഹിന്ദു നടന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ല, നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല് തെറിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല സിനിമകൾ വരട്ടെ. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരൊറ്റ സിനിമയിൽ RSS ശാഖ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? RSS ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പാർട്ടല്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു കേറ്റർ ടു എ സർട്ടൺ തിങ്ക് ടാങ്ക് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം. ഐ വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഞാൻ RSSന്റെ ശാഖ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അത് കാണിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തേത്. അതിനെ ഡിമോണൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ്, റൈറ്റ് വിങ്ങിനെ, ഫാസിസത്തിനെ ഡിമോണൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫാസിസം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് ദം. എന്റെ പട്ടി വരും, മരണം വരെ ഞാൻ നാമജപിക്കും. കേൾക്കണം നിനക്ക്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. നീ ആ കൊടി കണ്ടോ? അതിന്റെ നിറമാണ് ഈ മണ്ണിന്. നീയൊക്കെ എത്ര ചോര വീഴ്ത്തിയാലും ഈ മണ്ണിനെ ചൊമ്പിക്കാനാവൂല. What do you think of a leader of this country? When Kerala flood happens, he gives 100 crores and then sends 500 crores. And who thinks he can spend 3,000 crores to build a statue? What an insensitive leader do we have? What an insensitive leader do we have? You should raise that question. Do you know that? I mean, it is open. Megalomaniac, an ego-centered idiot fellow. He can't do this. He can't do this to this country. When there are no jobs in this country, when the agrarian crisis is happening in this country, you know, this cannot be done. And it is our money. It is our money. We are not begging. It is our money. We should ask him that question. And I think he should be made to pay for what he has done with us, with the taxpayers' money.
Who is Amit Shah? Telling you, I want to know who is Amit Shah in this country. कौन है अमित शाह? मैं पूछ रहा हूँ सवाल सीधा. नेता है? बिल्कुल. कि इस देश में कुछ बहुत अच्छा सोच से आए हैं, कुछ विजन बोल रहे हैं. अमित शाह जी की यही खासियत है कि अमित शाह आएंगे. This cannot be done. हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, लेकिन मियां अगर तुम्हारे पाप के कारण, ये तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के, तो मियां मुशर्रफ कान खुल के सुन लो, जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना, तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान. राम भक्तों ने रेलवे ना डब्बा में सળગાવી દીધા. હવે આપણા ગામને ખબર હતી, જોરથી તો કહો ભાઈ, સમાચાર મળ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણા ગામમાં આપણે કોઈની દુકાન બાળી હતી ભાઈ? આપણે કોઈનું ઘર બાળ્યું હતું? જોરથી બોલો ને. આપણે કોઈને ચક્કો માર્યું હતું? આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું હતું? આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી? તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી. ગામે ગામ જાણે બધા લોકોને કુટી બાળતા હતા, ગામે ગામ લોકોના માથા વાળતા હતા. એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યું. એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ. Mr. Modi, let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Karan, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment. And is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing, you're absolutely right. If it was it an is in observation. judgment, it is an observation. If it is in judgment, then I'll be happy to give you the answer. I'll tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Purple water. Yeah. दोस्ती बनी रहे. अपनी दोस्ती बनी रहे. I'll be happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't do this. It's okay. Your things are आपके ideas हैं. आप बोलते रहिए. करते रहिए. 3-4 questions I will let enjoy. So I can't. But Modi sahab, Please. Modi sahab,
करण देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाई कांट यू करेक्ट द इमेज? എന്നെ സംശയിക്കരുത്. ഈ മീശി വെച്ച് കരയിലട കഴുതേ, വെള്ളം വീണ് വീണ് ഇനി അത് വളരും. 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે. That is an admission of what happened in 2002, that there was a deliberate intent to teach a lesson to Muslims. And it works electorally for the BJP because many people who want to see this happen will rally behind it. चुनाव के माहौल में तो लेकिन बीजेपी का तो दबदबा है, बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी बन गई है गुजरात की, ये तो मानते हैं। अभी जैसे फिर से उन्होंने बोल दिया ना कि 2002 में हमने वो वापस करके बता, अमित शाह यहीं बोल के गए कि दंगाइयों को, उन्होंने कहा दंगाइयों को सबक सिखाया। सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग, सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग, आम आदमी थे हम, हमारे यहाँ रह रहे थे, हमारे ऊपर उन लोगों ने दंगा ही करा, दंगाई हमला उन लोगों ने करा हमारे ऊपर, हम तो यहाँ शांति से रह रहे थे। जिंदगी बदल गई है कि नहीं, 20 निकल गई है या अभी भी यादें आती है? याद जब मरेंगे तब तक नहीं भूल पाएंगे, आगे कहाँ निकलेंगे, बस वही दिल दिमाग में रहता है। माँ पैदा करने वाली माँ को थोड़ी भूल सकते, बहन माँ। इंसाफ मिला है कि नहीं? इंसाफ मिला, वो पकड़ लिए, बंद कर दिए थे, वापस छोड़ दिए उनको, इंसाफ मिला था। पर आप छोड़ना नहीं चाहती नरोड़ा, यहीं रहेगी? नहीं, हम तो यहीं रह रहे, जब हमारे मरे तो हम नहीं मर जाएंगे, यहीं रह, जीना यहाँ मरना यहाँ। ना यहाँ बस। आप और आपके हिंदू जो भाई बहन है उनमें संबंध अच्छे हो गए हैं कि नहीं, कि आप अपनी जिंदगी रहते हैं, वो अपनी जिंदगी? नहीं, बस हम तो हमारी जिंदगी रहते हैं, हम लोग उनसे अब वास्ता नहीं रखते। उनसे था, मेरी मम्मी ने भाई बनाया था, उसको खिलाना पिलाना सब करा था, उन्होंने मेरी माँ की जान ले ली, इसके लिए हम नहीं रखते। अब चुनाव आ रहे हैं, नरोड़ा और नोड़ा पाटिया, नरोड़ा गांव है और आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नोड़ा गांव में, तो दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वहाँ नहीं काटा होगा ना सब, नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआ एक था, कुआ में डाल के तरफ दिया सबके। पहले तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार मेरे को मिले ना तब, तो मैं बोला ये कहीं हमारे वहाँ बहुत पत्रकार और ऐसे तैसे आदमी आते हैं, तो मेरे को पूछते कि आप पाटिया खान? मैं बोला मैं पाटिया खान था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर एक हॉस्पिटल में दाखिल। उनके थे ना सब, ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे, ट्यूबवेल तो थी हमारे पास उस टाइम, तो हमने मजा ही और था सब, और हमारे 4 कार्यकर्ता मर गए।